So hey coders, welcome to lecture 3 of Python programming series. So in this series, we will be covering loop, which is the most important part of our coding. So for this, we will do break and continue, nested loop patterns, loop else close, practice problems, and some common mistakes. Okay, so first of all, I would like to tell you what we have discussed in our previous class. In previous class, we have discussed arithmetic operators, if, else, if for decision making, initial conditions. This is also very important part. So if you have not watched this video, first of all see this video, then come to this part for better understanding. Okay, so first of all I would like to tell you what is loops and why do we need it. Suppose you are working in a company, so if anyone give you a task to print 5 number from 1 to 5, so what you will do? Many of you will think we will just simply write a command print, but we will not do in this way. For this repetitive task, we use loop. Let me create one Python file. Okay, so now for some of you will say we will print, just print 1, sorry, 1, print 2, print 3, print 4, print 5. Many of you will say we will do like this, but this is not the accurate task we should do. The actual thing we should do is we should use loop. What if someone says to print 1 crore number? So what you will do? You will write like print 5, print 6, print 10. This will take a lot of time. So to do this repetitive task with efficiency, we use loop. So what is the definition of loop? Loop in a coding is a thing which is used to do repetitive tasks with efficiency and coding. Okay. The syntax of loop is, first of all, I would like to tell you there are two type of loop. For loop and while loop. And loop let you to repeat the block of code multiple times without rewriting it. I have told you. Imagine printing hello 100 times with printing 100 times is unrealistic. Yes, we know if we want to print hello 100 times, we will not write print hello, print hello, print hello. This would take a lot of time and there will be very much loss of energy. So in Python, there are mainly two type of loop, while loop and for loop. What is the difference between them? We use while loop if we know the condition and we use for loop if we know the iteration. I would like to explain you like this in a way. Suppose someone asks us to print number from 1 to 20 with the use of for loop. Okay, so first of all I will explain you for loop. When we use for loop, when we know the iteration means हमें कितने तक नंबर को प्रिंट करना है. मतलब अगर हमें किसी ने कहा कि हमें 1 to 20 नंबर तक प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे हम for loop यूज करते हैं. इस चीज को हम कहते हैं iteration. This is known as iteration. So the syntax of for loop is for I in range. Sorry, range. So at first we will write starting, from where we want to start the value. Suppose someone asks us to print number from 2 to 20. So this is starting index, comma. Here comma will come. And now we will write ending index till where we want the value. 20, comma, steps. Steps means how much value we want to skip. For example, if I will write 2 here, so value will be printed as 2, 4, 6, 8. So step means how much difference there will be there. Okay. So I will write print I. Now I will run the command. See here, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So many of you will be thinking, if I have written it 20, so why there is 18? Why? Because this last index is not included. 20 is not included. If we want number till 20, so we will write one more 21. Okay. Here we can see when I have written it 21, now we have got the correct answer 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Okay, so what it means that last index is not included. Suppose we want a number from 2 to 21 in series. So here I will remove this step. Okay, because the default value of step is 1 only. If we will write 1 or if we will not write anything, this means same. Here you can see 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 20. If we want number till 21, from 1 to 21, suppose we think. So starting index will be 1, which is included. But this last one index is not included. So we will write here 22.
So here we can see till 21 we need number. So here we have written 22. Why? Because last index is not included. Okay. For example, if I will take another example. Suppose someone asks us to print hello 100 times. So we will write for I in range. So we want to do a task 100 times. We know iteration means we know number कि हमें कितनी बार टास्क को करना है, हमें 100 बार करना है, तो हम लिखेंगे 1,100 or we can 1,101 or we can write 0,100. So loop will run 100 times. Okay, print hello. So now hello will be printed 100 times. Here we can see this. Okay, this hello is printed 100 times. So how much iteration we will be giving here? So under this for loop, whatever we will write, this will run according to that iteration. Suppose if I will write here till 10 only if I require, so this loop will run 10 times. So if this loop will run 10 times, so this print command under this loop will also run 10 times. So here we can see, suppose if someone asks us to print even numbers, okay, so I will print an even number. Suppose someone asks us to print even number from 1 to 20. Okay, I in range 1. So if we want even number, we will start from 0, 21. Step we will take off 2. Okay, here we will provide print I. So here we can see there are even number. But what if we require any other method for even numbers? Here we have just given steps, so that's why even number are coming. What if we want to make one logic for even number? So I have told you for even number, I have told you one logic in my earlier videos. So we will start from 0, 21. So here we will just put one if command. If I परसेंट टू इक्वल टू 0. सो व्हाट डज इट मीन हियर? अगर कोई भी आई के अंदर क्या स्टोर होगा, आई के अंदर पहले 0 आएगा जब एक बार लूप रन करेगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, सो ऑन वैल्यूज आती नहीं आई के अंदर, और फिर आई सपोज जब पहली बार लूप वर्क करेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो जब अंदर आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो वो चेक करेगा, कंपेयर करेगा 2 से वैल्यू, जब वो उसको 2 से डिवाइड करेगा तो चेक करेगा कि क्या आंसर 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा। इफ आई परसेंट टू इज इक्वल टू 0 मतलब वो इवन नंबर है, तो 0 करे तो कंडीशन चेक नहीं होगी, ठीक है। 1 आ गया, सपोज अब एक बार लूप रन हो गया तो अब 0 से 1 हो जाएगी वैल्यू उसकी, तो जब यहाँ पे 1 चेक करेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इफ प्रिंट I. See the output here. 2, 4, 6, 8. Why? Whenever 1 will come here, this condition will not met, so nothing will happen. This iteration is completed. So then it will reach to 2. Then when 2 will come here, now the value of I is 2. So 2% 2 equal to 0 we know, so I will be printed. So now 3 will come for I. Now the value of I is 3. And 3% 2 is not equal to 0, we know, so nothing will happen. Now next value will be 4, and so on these value will be going on. मतलब ये है इसका कि 0 पहले आई के अंदर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और अंदर हम चेक करते जाएंगे जो भी आई के अंदर आ रहा है क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें उसको प्रिंट करना है, अगर नहीं कर रहा तो हमें नहीं करना है। सपोज अगर हमें कंडीशन गिवन होगी कि हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं, तो ओड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इफ आई परसेंट 2 इज नॉट इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज द रूल ऑफ ओड नंबर इज दैट ओनली दैट दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2. We know na that odd numbers are not divisible by 2. So we will write here 1, 3, 5, 7. You can see the output. Okay. We will take one more example for better understanding. First we will discuss only for loop, then we will discuss while loop. First we will do some questions on for loop, then we will understand what while loop is. While loop we will skip now for, but first we will do for loop. So the syntax I have told you for loop. Okay, the syntax is, I am repeating again, for I in range, iteration we require starting index, ending index, and step we can require. If step we want 1, so default is 1 only, so we don't have to write any value here. But if we want, it should take step of 3, suppose. Okay, means I want to print number from 0 to 21 with the step of 3. So I will, whenever I will write I here, so here it becomes 0, 3, 6. So we can see here it is taking the gap of now 3. If I will write 5 here, 0, 5, 10, 15, 20. So now I think you are completely aware how to start, how to stop, how to step. Okay, so now we will discuss some more examples for better understanding.
Range in action, this I have told you why range. This also I have told you that ending index is 1 less than we require. For versus while loop. Okay. First of all, we will discuss some example on for loop. Hmm. Suppose for if we want to print one table, suppose, if we want to print a table of 2, so what we will write for I in range 1, 11, because if we want table from 1 to 10, so what we will write starting index, ending index plus 1, because we require table till 10, but we will write a 11. Print 2% 2 star I, sorry, for multiply we use star. So 2 star I means first the value of h starting the value of I will be 1, so 2 into 1 2, then the I will become 2, so 2 into 2 4, then I will become 3. Okay, what if we require, see, I will show you directly, 2 4 6 8 10 12 14 13. What if we require to write like 2 multiplied by 1 equal to this, 2 multiplied by this? For this I will tell you, suppose there is one variable a is equal to 20. Suppose I have to print 20, so I will write print a. Okay, print a 20. What if I have to write the value of a equal to 20? So how I will write here, I will put double quotes, the, in this I will write, as I have told you, for string we use double quotes, the value of a is, so here to, whenever I will run this command, this there error will come. Why? We have to apply one comma after this. This will not come under double quotes because this is a variable. If I will put this in under double quotes, it will become also string. So but I don't want this. I want this to be act as a variable. So now there is no error. The value of a is 20. We just simply apply one comma. So here we can see the value of a is 20. Suppose I store my name equal to Lakshay, and I have to print here the name of person is, so I will write simply the name of person is comma name, variable name, their value is stored. So here we can see the name of person is Lakshay. Okay, so this is a very simple method. So now I will tell how to print the table. As same for I in range, the syntax is same, 1 comma 11 print. So I want 2 star I, so I will write in double quotes 2 space star comma I, then again comma, I need equals to, or I can use this, then again comma 2 star I. This I will explain now. See, 2 star 1, 2 star 2, 2 star 3 is equal to this. How we have done this? We know that 2 is fixed, so it is a part of string or text, so it will come under double braces. So here I have applied double braces and 2 and star are fixed. But the value of I should be changing now. I must be changing at every time, so I have applied one comma, and I is a variable, so I will not come under double braces. So here I have applied one comma and I have written I. Then again one comma, and again I need this. This is a constant, a kind of equal to, we can say, equal to. Okay, so again I need this, so I will write this under double quotes, comma 2 star I. What does it mean? 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, like this only. Okay, so by this way we can print the table. So now I will explain you what is a break command and continue command. So break is nothing. Break is just to skip that all iteration of loop if the condition is met. For example, for I in range 2 to 20. So for example, you have given a task to find out that particular number. If that particular number is present in loop, that loop must stop at that position only. Okay, so I will use for I in range, this loop will run from 2 to 19. If I equal to 9, suppose I want to stop loop if I become equal to 9, so I will use the break command. If I equal to 9, then break. Okay, else print I.
Sorry, it will not come under double quotes. So here what will happen? Whenever 9 will come, whenever I will become 9, so this loop will be terminated. Okay, this will not go till last. मतलब ये लूप वैसे तो 2 से 20 तक चलना चाहिए था, लेकिन अब ये लूप सिर्फ 2 से 9 तक चलेगा, क्योंकि हमने अब ब्रेक कमांड का यूज करा है। ब्रेक कमांड हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें दी जाए कि ऐसा वैल्यू आने पर लूप रुक जाना चाहिए, तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि 9 आते ही लूप रुक जाए, तो हम ब्रेक का कमांड का यूज करेंगे। So here we can see 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Why not 9, 10, 11, 12? Because we have used break command here. Whenever I will become 9, so this loop will be terminated. Same as break, there is one continue. Suppose in this case we wanted that if 9 comes, the whole loop should be terminated. What if we want to skip that particular iteration? Suppose if we want that in our loop, if 12 come, that 12 should be skipped only, rest all the value should come. So we will use continue. If I equal to 9, continue. So what continue will do? This loop will run normally, but whenever 9 will come na, so this loop will be terminated. Whole loop will not be terminated. That iteration will be terminated. So whenever 9 will come, that iteration will be terminated. So here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 is not coming. Why? Because if I equal to 9 continues there, so that particular iteration will be terminated. So what is the difference between break and continue? So break we use whenever at particular condition we want to terminate whole loop, we use break. But whenever we want to continue or we want to break that particular iteration, suppose if we don't want any particular iteration in that, so we use the continue. Okay. Another example we take, that is for range 2, 40, suppose I want if 35 appear here, so it should be terminated, means whole loop should be terminated if 35 comes. So I will write if I equal to 35 break. So what will happen here? When 35 will come, the loop will be terminated. Print I. Here we can see when 35 came, the loop break. But what if we want that if 35 come, that particular 35 must be skipped, rest all values should come. So we will write continue. But what will happen now? Whenever 35 will come, this print command will not work. Again the loop will be go to next value, which is 36. So as you can see, 35 is not coming, 35 is skipped. Okay, so difference between that is break and continue is whenever we want to skip particular iteration, we use continue, but whenever we want to terminate whole loop, we use break. Okay, so coming to next part, this we have discussed. Pass statement. Pass statement is like to do nothing. Means suppose manager asks you to write a code. Okay, manager asks you to write a code, but he asks you to write two loop. Okay, for I in range 2 to 20. He asks you to write one code for writing even number. Okay, and write if for even number we will do if I percent 2 equal to 0, print I. Okay, so we know that this command will do what it will do. This command will do what it will do. This command will do. This command will print even numbers. Okay, so here we can see manager asks you to write one more code, but he doesn't know what he have to write in that. So what we will write means he asks you to create two loops, but for one loop he know what that loop will do, but for another loop he don't know. For I in range, so we just write simply the pass command. Okay, 2 to 20, but we don't know that what particular task this command will do. Suppose there are multiple kind of work, but we don't know that which task will this command do. So just we will write pass. Pass means just ignore this part, means this loop will not do and nothing. Here we can see only first loop is working, second loop is not working. Why? Because we have written here pass command. Pass means to avoid, means we don't know what to write in this part, but whenever later we got to know that what we have to write, we will write here. Okay, so this is also simple use. Pass command is completed.
What is the loop else called that? We will do it later. Nested loop. Yesterday I have told you nested if else condition. Today I will told you nested loop. Nested means same, something inside another something. So nested loop means a loop inside another loop. For I in range 2 to 20. Okay. Now for j in range. Suppose this loop is working till 3 to 6. So print I star j. So here we can see this iteration is still 2 to 20 and this is 3 to 6. So first 2 will be taken and from here 3 will be taken. Then when this part is completed, 2 into 3. 2 into 3 is 6. Here we can see. Okay. Then this value will remain same, but this will increase. Then it will become 4. So 2 into 4, 8. Then also this command will remain same. This will increase. It will become 5. So 2 into 5 is 10. So now we go to let this loop is completed. So this iteration now will change. It will become 3. Then whole loop will run. मतलब क्या है इसका, पहले इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसकी पूरी वैल्यू चलेगी, मतलब ये 3 से 5 तक चलेगा. फिर क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी 3, फिर से 3 से 5 तक चलेगा, फिर इसकी वैल्यू होगी 4, फिर से 3 से 5 तक चलेगा. मीन्स इनर लूप विल वर्क टिल दिस लूप इज कंप्लीटेड. मतलब क्या है कि अंदर वाला लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा बाहर वाला लूप कंप्लीट नहीं हो जाता. मीन्स जब तक इसकी आइट्रेशन 2 से 19 तक कंप्लीट नहीं होती तब तक अंदर वाला लूप चलता रहेगा. ठीक है, दिस इज ओनली नेस्टेड लूप. ओके, nested loop pattern print. Then suppose, wait, we will skip this practice problem for n range n plus 1 total. Okay, suppose if we want to write a factorial of a number, suppose factorial. Do you know the meaning of factorial? Factorial means जैसे अगर हम 4 का factorial निकाल रहे हैं तो factorial का मतलब क्या होता है, 4 into 3 into 2 into 1. अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उससे कम कम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करते रहना है. और अगर हमें किसी बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो हम लूप की मदद से कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा. ठीक है, पहले हम उस नंबर का इनपुट लेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है. नम इक्वल टू इनपुट एंटर. नाउ वी विल राइट नम. हमें जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है हम पहले वो इनपुट लेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे. 4 आई इन रेंज. हमें फैक्टोरियल कहाँ से निकालते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये हम करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. तो बात तो एक ही है ना, जीरो हम नहीं लेंगे इसके अंदर. क्यों नहीं लेंगे, आंसर जीरो हो जाएगा. सो हम 1 से शुरू करेंगे. हम कहाँ तक चलेंगे, हम वहां तक चलेंगे जहां तक हमें नंबर इनपुट है. अगर हमें 5 का निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें करेंगे नम प्लस 1. वाई, बिकॉज इसकी इटरेशन कम चलती है. अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो ये 1 से 4 तक चलेगा. सो अगर मुझे 5 तक का चाहिए तो मुझे 5 प्लस 1 6 करना पड़ेगा, तब जाके उस नंबर तक चलेगा ये. ठीक है, डबल कोट्स. सो अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा फैक्ट. हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फैक्ट इक्वल टू 1. तो अभी फैक्ट क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई. इस लाइन का मतलब क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है हमें पता है, तो फैक्ट इज इक्वल टू में 1 स्टार 1. तो 1 स्टार 1 क्या होता है 1, तो इसके अंदर 1 स्टोर होगा. फिर जब वैल्यू 2 होगी, अब आई की वैल्यू 2 होगी तो फैक्ट की वैल्यू पहले क्या थी 1, तो फैक्ट इज इक्वल टू 1 स्टार 2. तो अब 2 क्या होगा, 2 जो हमें नई वैल्यू आएगी वो फिर से फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो फैक्ट क्या हो जाएगा अब 2. सो अब फिर से आई की वैल्यू चेंज होगी 3. तो अब क्या होगा, फैक्ट इक्वल टू 2, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू अब हमें चेंज कर दी थी, 2 हो गई थी, तो 2 स्टार 3 6. फिर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4. तो 4 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू 3 स्टार 4, तो क्या होगा 12. ठीक है, तो फिर से फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी. क्या होगा कि जो 12 है ये फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अब फैक्ट 12 के अंदर स्टोर हो गया तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 12. तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5. तो
12 इंटू 5 क्या होता है 60, 12 5 जे 60, तो जो 60 होगा ना वो इस फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम अपने फैक्ट को प्रिंट करेंगे, फैक्ट, so we can see enter the number. Suppose we want to find the factorial of 5. As you know, the factorial of 5 is 120. So here we can see 5. Suppose if you want to find the factorial of 4, 4 का factorial क्या होता है 24 होता है, हमें पता है 24. So by this way we can calculate the factorial of a number. Okay. Suppose instead of factorial we want to count the sum of number till that. Suppose अगर हमें एक नंबर गिवन है 5, हमें निकालना है कि 0 से 5 तक लेके नंबर्स का सम क्या होगा, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे सम, फैक्ट को उठा के सम, और सम की वैल्यू हम 0 रखेंगे स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि शुरू में सम 0 होना चाहिए। अगर हम फैक्ट को 0 करते तो ये 0 ही चलता हमेशा, फैक्ट इज इक्वल टू 0 स्टार आई, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हर बार 0 ही होता, ठीक है। तभी फैक्टोरियल के केस में नंबर हमने 1 लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सम 0 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 में कुछ भी प्लस करेंगे तो आंसर सेम रहता है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। वाई सम प्लस आई? आई विल टेल यू नाउ ओनली। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 हो गया। अब सम के अंदर 1 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब सम क्या हो चुका है 1 हो चुका है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू सम, अब सम की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2। क्यों? अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो अब सम की वैल्यू 3 होगी। तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस क्या होगा, क्या होगा 3 होगा, तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 6, 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, ठीक है। अब वैसे ही 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। सो जब भी हम यहाँ पे सम को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, नंबर में डाला 5, क्या आया 15। क्यों आया 15? हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होता है 15। सपोज सम इज इक्वल टू 0 है तो होगा, हमने 0 यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मतलब 0 पे वैल्यू ले ली, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या होगा 1, ठीक है। अब जो 1 है ये सम के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड में वेरिएबल है। तो अब जब अगली बार लूप चलेगा तो हमें पता है कि सम की वैल्यू 1 है, तो सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। अब ये 3 क्या होगा सम के अंदर स्टोर होगा। अब क्या होगा 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, ऐसे ऐसे वैल्यू स्टोर होती जाएगी, ठीक है। सो हमने अब फाउंड आउट करा, हमने अभी चेक करा कि हम कैसे नंबर तक का सम का निकाल सकते हैं, ठीक है। Practice problem 2. Suppose, yeah, this we have done only how to calculate the table of a number. Okay, so we have discussed our for loop. So now we will start while loop. So what is while loop? In case of for loop, we were given a condition, means we were given a iteration from this value to this value, means हमें इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक के बीच में चेक करना है, या फिर हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में प्रिंट करना है। लेकिन अगर हमें ऐसी कुछ आइटरेशन नहीं गिवन, बट हमें कंडीशन गिवन है कि हमें जब तक प्रिंट करना है जब तक उस पर्टिकुलर नंबर से वैल्यू लेस देना है। फॉर एग्जाम्पल wait a minute. सपोज काउंट इक्वल टू 1 है, लेकिन हमें जब तक अंदर का लूप चलाना है जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। हमें इसमें कोई आइटरेशन नहीं गिवन, हमें इसमें कंडीशन गिवन है जब तक, कब तक जब तक हमें काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमें ये प्रिंट कराना है। ओके, लेट मी शो यू विद एग्जांपल। काउंट इक्वल टू 0 while count is less than equal to 5, print count एंड काउंट प्लस प्लस। इसमें हमें प्लस प्लस की कंडीशन खुद देनी पड़ती है, इसमें खुद से नहीं बढ़ता है वो, ठीक है। सॉरी, काउंट ठीक है, इसमें काउंट प्लस प्लस काम नहीं है। काउंट इक्वल टू काउंट, सॉरी मैं ना सी लैंग्वेज का मुझे याद था तो तभी
काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इसमें वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक काउंट की वैल्यू 0 से 5 तक चलेगी। मीन्स जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी तब तक ये वाइल लूप वर्क करेगा। तो इसमें हमें एक कंडीशन गिवन है कब तक लूप चलेगा, लेकिन फॉर लूप के केस में हमको आइटरेशन गिवन थी यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें वैल्यू फिक्स थी। बट इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इसमें हमें कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखेंगे हम इसका। For example, I want to print a number from 0 to 20. So while I will take one more variable num equal to 0, while num is less than equal to 20, print num and num equal to num plus 1। तो अभी क्या करेगा, ये num की वैल्यू एक एक से बढ़ाता भी जाएगा और एक कंडीशन भी चेक करेगा कि num की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है क्या नहीं है। सपोज स्टार्टिंग में num की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो अभी चेक करेगा क्या 0 लेस देन इक्वल टू 20 है, ट्रू है, तो ये नम को प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, नम की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा, num equal to 0 plus 1 which is 1, so this 1 will be stored in this num। Okay, so now this will go back again to this while, so now it will check is 1 less than equal to 20, yes true, so now it will print that num again। So this will work until num become less than equal to 20। Suppose num here become equal to 20, so it will check here is num less than equal to 20, yes, so num will be printed। So now num equal to num plus 1, so it will become 21 now, so 21 is not less than equal to 20, so this become false, so this loop will be terminated। One more example, मीन्स while लूप का सिंटेक्स बहुत सिंपल है for लूप के केस में, और ज्यादातर केसेस में हम for लूप यूज करेंगे, while लूप का यूज काफी कम होता है। This we discuss, this we discuss, this we discuss। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फोर लूप का, while और for लूप हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह। तब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नेम है, नेम इक्वल टू लक्ष्य खुराना, ठीक है। सो अब हमें एक एक करके इस नेम को प्रिंट कराना है, मतलब हमें इस नेम का एक एक अल्फाबेट प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, फोर आई इन नेम प्रिंट आई। तो क्या होगा, एक एक करके आई के अंदर, फोर आई इन नेम मीन्स आई के अंदर नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो एक एक करके आएगी। पहले आई के अंदर एल आएगा, फिर ए आएगा, फिर की आएगा, और ऐसे ऐसे करके आई प्रिंट होता जाएगा। हियर वी कैन सी एल ए के एस एच ए वाई खुराना। ओके, वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक नेम। Suppose we want to give one condition, if A is present in my name, so loop must be terminated, or if A is present in my name, it should print that A is present। Okay, name equal to if I equal to A, print A is present। So here we can see how much time A is coming, 1 2 3 4, so 4 times A is coming, so 4 times it will be printing। Suppose if we require only one time, it should print A is present, so we will use break here। If I equal to A, print A is present, then break। What does break means? Break means whenever I will come here, this whole loop will be terminated। Here you can see LA, A comes here, so A is present will be printed, now the loop will be break। So what will happen? Now loop will not run। Continue, we can also use continue will skip that particular iteration। Suppose if we want to count how much time A is coming in my name, okay, so if I is equal to A, we will start one counter also, count equal to 0। So how much time A is coming, 1 2 3 4 time is coming, so how much time this if will be active, 4 times, so count equal to count plus 1।
and later we will print count here. Print count. Here we can see 4 is answer. Why? Because A comes here. So for I in name, I is A. So if A equal to A, so now this condition is true. तो ये condition सही है. तो अब क्या होगा? अगर condition सही है, तो ये part execute करेगा. Count क्या होगा? 0 equal to 0 plus 1, which is 1. And this 1 will be stored in this 1. Again, when I will come here, so again this condition is true. So 1 equal to 1 plus 1, which is 2. So as it is, 1 1 1 करके वो 4 हो जाएगा और हमारा print हो जाएगा. ठीक है? This way, this is also a good example. We can discuss one more example, which is, let me see, is prime. Suppose we want to check a number if it is a prime number or not. Okay, for first we will take input for that number. Int input enter number. If we will run one loop. What is a prime number? A prime number is a number which is divided by itself or a 1. Okay, so we will check for I and range, and starting we will prime equal to 1. Okay, this is one variable. So we will run from 2. Why? Because in this loop, let me first write this program. 2 comma num. I'm inputting a 7 here. So here we can see 7 is a prime number. If I will input 8, 8 is not a prime number, we know. Break prime equal to 0. So here we can see if I will input here 8, so the number is a prime number, but this is wrong. The number is not a prime number. I will write here. So when I will input 8, the number is not a prime number. If I will input here 7, the answer should be, एक minute, the answer should be, the number is a prime number. So here it is correct. So what this code is doing, for example हमने यहाँ से शुरू करा 2 से, तो क्या करेगा ये 7 को 2 से डिवाइड करेगा, चेक करेगा कि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा. तो ये 2 से लेकर नम -1 तक चलेगा. तो ये 2 से लेकर 6 तक चलेगा. अगर बीच में एक बार भी रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम इक्वल टू 0 और वो सीधा प्रिंट कर देगा दिस नंबर इज द नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, बट अगर एक बार भी रिमाइंडर सच कुछ कंडीशन ही नहीं आई, सपोज 9 है, तो 9 2 से लेकर 8 के बीच में किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो ये एल्स पार्ट वर्क करेगा. ओके, so this was the condition to check whether a given number is a prime or not. Okay. Suppose we want to reverse a number. Okay. Number we will input here. So we will write its code like reverse. First we will take one variable for range. क्या करेंगे, ये कब तक चलेगा? हम इसके अंदर while लूप का भी यूज कर सकते हैं. while num is greater than 0. greater than 0. ठीक है. if so एक में हम लेंगे रिमाइंडर r
on. Remainder equal to num percent 10. Okay, so now reverse equal to reverse star 10 plus that remainder, and num equal to num slash 10, and reverse. First we will see its output. Wait a minute. I think there is one mistake here. It is coming INF. Wait a minute. Reverse equal to 0 while num is greater than 0. Remainder is equal to num percent 10. I can write here remainder equal to 0. Okay. Num is equal to num slash 10. Okay. And input a number reverse is equal to 0 while num is. Again, I will be seeing here it is coming one error. Wait, let me see. So here we can see I have written the whole program to reverse a number. What it is doing, I will tell you in Hindi. Okay. फर्स्ट वी विल टेकिंग इनपुट. पहले हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर का इनपुट ले रहे हैं और हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिवर्स इज इक्वल टू 0. हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई इसकी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है. वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप तब तक वर्क करेगा जब तक जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है. तो हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंट 10. तो जब भी हम किसी नंबर को, सपोज 1 2 3 4 5 है, जब भी हम उसको 10 से रिमाइंडर निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 10 का रिमाइंडर जो निकालते हैं वो हमेशा लास्ट डिजिट आती है उसकी. Suppose if we are dividing 123 divided by 10, so remainder will be 3. So in this remainder 3 will be stored. Okay, we can take example of this only, 1 2 3 4. If 1 2 3 4 is divided by 10, so in this rem 4 will come here. Okay, so reverse is equal to 0, so 0 into 10, 0 plus 4, so in reverse 4 is stored. Okay, and num is equal to num divided by 10, but it will become 1 2 3 only, that 4 will be removed. Okay, so now it will again come, it will check is 1 2 3 greater than 0. Yes, we know it is greater than 0. So now remainder is equal to num percent 10. Now num is 123, so now in remainder 3 will be stored here. Okay, so reverse is equal to, what was the reverse, in reverse 4 was stored, so 4 into 10 plus 3 43. So num is equal to num double slash 10 again. So now 1 2 num will become 12. ठीक है, तो num इसमें 12 बन जाएगा. अब क्या करेंगे, हम फिर से रिमाइंडर, अब हम चेक करेंगे कि क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमें पता है. तो हम फिर से रिमाइंडर निकाल लेंगे. तो रिमाइंडर में अब क्या आएगा, 2 आ जाएगा. 12 परसेंट 10 इक्वल टू 2, हमेशा इसमें से लास्ट नंबर आता है. ठीक है, तो रिवर्स इज इक्वल टू 42, क्योंकि हमारा पहले रिवर्स था 42. 42 इंटू 10 प्लस में क्या आएगा 2, तो 4. 42 इंटू 10 420 प्लस में 3 इज इक्वल टू 423. ओके, 432, सॉरी 43 था ना, 432. Now 12 is left, so num is equal to num double slash 10. Now 1 will answer, so 1 is greater than 0. Remainder is equal to num percent 10, 1 will come here. Okay, so reverse 432 into 10 plus 1, so what it will become, 4321. And now 1 slash slash 10 equal to 0. So now when num will check here, num greater than 0, no, so this loop will be terminated and we will print reverse. So here we can see how we can calculate the reverse of a number. So in this we have discussed how to print the factorial of a number, how to check the sum of a number, how to print the reverse, how to check a prime number. Okay, so these questions you must practice on by own. Okay, I am telling you a solution, but instead of learning or just keeping things in mind, you must first solve by yourself. Okay, so now we have discussed ample of questions. So now I will telling you that common mistakes some students do with the loop. Forgetting to update the counter. I would like to tell you one most important thing, that is infinite loop.
For example, if I am giving counter equal to 0 and while counter is greater than, while counter is less than 20 suppose, okay, print काउंटर। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें काउंटर को प्रिंट करना है जब तक वो 20 से लेस देन है। तो हमें इसके अंदर एक कंडीशन भी देनी पड़ती है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ताकि काउंटर एक एक से इंक्रीज होता जाए। बट अगर मैं वो कंडीशन देना भूल गया तो हमारा लूप क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कभी एंडिंग कंडीशन आएगी ही नहीं, क्योंकि काउंटर हमेशा 0 रहेगा। तो प्रिंट काउंटर 0 0 0 प्रिंट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 लगाया नहीं, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी ही नहीं। ठीक है, क्या होगा, काउंटर इज इक्वल टू 0 है, हमने इसके अंदर कोई कंडीशन दी नहीं, जैसे कि कोई काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना। क्यों नहीं है, हम देना भूल गए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि ये जो काउंटर लेस देन 20 है, ये कंडीशन कभी मीट ही नहीं करेगी। अगर मैं इसको अपने पीसी में रन करूंगा तो शायद क्रैश कर जाए, तो आप अपने पीसी में इसको ट्राई मत करना। हियर यू कैन सी 0 0 0, ये तब तक चलेगा जब तक कंप्यूटर की मेमोरी फुल नहीं हो जाती। तो ऐसा कोड आप कुछ ट्राई मत करना इसको, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये भी इनफिनिटली चले जा रहा है। ये रुक जाएगा, ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक इसकी मेमोरी फुल नहीं होगी, ठीक है। ये भी चल रहा है। हम तो अब ये देखिए, ये 0 0 0 जो मैं इसको स्क्रॉल करूंगा चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो ये इनफिनिट लूप है, जो कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते थे। तो इससे आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। ऑफ बाय वन एनर्जी मैंने आपको समझा दिया, मॉडिफाइंग ओल्ड लिस्ट ये भी मैंने आपको समझा दिया, ओवर यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो जो हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू है उसका लूप, उसका जो यूज है वो बहुत लिमिट में करना है, उसको ओवर यूज नहीं करना है, ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। Quick recap. I would like to tell you what we have done in this hour. Okay, we have discussed while loop. We have discussed for loop. I have told you that range. मैंने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, क्या स्टेप होता है। ब्रेक हमने यूज करा, हमने कंटिन्यू यूज करा, हमने पास भी यूज करा। लूप एल्स हमने यूज करा, नेस्टेड लूप हमने पढ़ा, नेस्टेड लूप से हमने कैसे निकाला, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी करी, इसके अंदर हमने चेक करा हम कैसे प्राइम नंबर निकालते हैं, हम कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं, हम कैसे सम निकालते हैं, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे। तो अगर आपको क्वेश्चन शीट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कमिंग इन पार्ट 4। सो अब हम इस सीरीज के पार्ट 4 में क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट होता है, मैंने आपको बताया जो डबल कोट्स में आता है, हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हमें स्ट्रिंग को समझना आसान बना देते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग को कुछ और टाइप में कन्वर्ट करना, अपर केस लोअर केस, ये चीजें हैं। स्ट्रिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो जो क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें, हमारी जो मेन एनहांसिबिलिटी है ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होती है। तो हमें खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद से लॉजिक बिल्ड करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं भी क्या करता था कि मैं सिर्फ वीडियो देखता था, मैं सोचता था मुझे सब कुछ आ गया, नहीं। बट जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक आपसे नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।